about it in a Google Meet. Okay. Now we are going to start our third chapter, most important chapter, that is so called the rectilinear motion or the motion in a straight line. Okay. In the word of the Einstein, the motion is the everywhere. Motion is the most phenomenal concept into the entire universe. Okay? Motion is the most common into the universe. Into the entire universe, nothing is steady. Each and everything which you observe, which you see, which you experience, that is in motion. If you want to think which object is steady, then it is nothing like that. Okay? Each and everything is in motion. ठीक है? अर्थात समझते हैं इसे कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में गति एक कॉमन यानी कि एक सामान्य गुणधर्म है. ओके? तो हमारा जो चैप्टर है वो मोशन के लिए है, मोशन के आसपास है. मोशन क्या होता है वो समझना है, राइट? सो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोशन? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, अब कब कह सकते हो? ओके, सो यू हैव टू गिव द डेफिनेशन इन द फैशन ऑफ व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट change its own position with respect to another object, then such kind of the object or that object is in motion, we can say that. Again, I repeat it. Motion is a relative concept. Motion पूरा का पूरा जो concept है वो relative है. यानी कि आप कोई भी object steady है और उसके respect में दूसरा object move हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो. But मोशन को समझना पेचीदा है. ठीक है? चलिए धीरे धीरे हम न्यूटन के नियम समझेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा कंसेप्ट मोशन का आपके समझ में आ जाएगा. बट फॉर अ व्हाइल पहले एक छोटी सी डेफिनेशन फिर से मैं रिपीट करता हूं. व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स ओन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. डेफिनेशन में लिखता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं. Okay, so what is motion? When any object change its own position with respect to इसको हम शॉर्ट में WRT लिखेंगे फ्यूचर में, with respect to. ठीक है? with respect to another object, then it is said to be in. So here first we have derive or write the definition of the motion. Okay? जैसे कि इस बोर्ड की फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ध्यान दिया जाए तो ये बोर्ड स्टेडी है और मैं उसके सामने हिल डुल रहा हूं, तो कह सकते हो आप कि मैं मोशन में हूं. राइट? चलिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द मोशन इज सेड, यानी मोशन का अभ्यास क्या कहा जाता है? राइट? दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. Right? The study of the motion is called mechanics, and it is divided into two sections. It is divided into two parts. First is kinematics and second is dynamics. Okay? I am repeating. First is kinematics and second is dynamics. What is the difference between these two mechanics or two branch which is deals with the motion but in different aspect? Okay? So
First, we write the two-part definition of the mechanics, and then we will elaborate it. Okay? So, study of motion is called mechanics. Right? And it is divided into the two parts. First is kinematics. Okay? And second one is dynamics. Okay, now I write the definition of the kinematics. This branch of physics that deals with motion. Both branch deals with the motion, but without causes of the motion. That is called kinematics. Without cause, kinematics. Without cause, kinematics. With cause, dynamics. With cause, dynamics. As a short mechanics. Okay? Yeah, the branch of physics that deals with the motion without considering its causes. Motion क्यों हो रही है? हमें लेना देना नहीं है. Motion है, study. Motion है, अभ्यास करो. That is called kinematics. Okay? Dynamics. Motion क्यों हो रही है? बल लग रहा है. Force is expanding on it. That is why the motion is in there. Okay? What is the property of the moving body? Okay, all the criteria if you covered, then that kind of the study is called dynamics. With causes and property of moving body, that is called dynamics. Okay, definition is there. So, the branch of physics which this with motion without considering its causes. It is known as, or it is called, kinematics. Okay, its second definition we elaborate in the fashion of this. Here, the study of motion with causes okay and property of moving body and property of moving body. Okay, such study is called dynamics. Okay, you either can say that the kinematics and dynamics is equals to mechanics. Okay, and the total study then again kinematics plus mechanics, sorry, dynamics
Okay, combinedly called mechanics. आप इधर देख सकते हो. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. As I told you that the motion is the relative concept, so in that cases you have to take care about the frame of reference. Okay, definition में ही है with respect to another. Yeah, okay, यानी with respect to क्या मतलब क्या है उसका. Okay, so that is called frame of reference. Frame of reference के बारे में चैप्टर नंबर 5 में elaborated है, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, but primary definition and its part here we are going to discuss, because here we are going to learn about the frame of reference. Big thing. Okay, if you have learned that the Cartesian coordinate system, यहाँ पे हमें तैयार करनी है Cartesian coordinate system. Okay, पर वो क्या बोला जाता है? Frame of reference. तो frame of reference की definition क्या है देख लेते हैं. Okay, so the place and the situation around the observer. ठीक है, आप जो भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो स्टेडी है या मोशन में है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके आसपास की सिचुएशन पर. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अगर आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और आप खिड़की से बाहर देखोगे तो ट्रीज, रोड्स, बिल्डिंग्स, एवरी ऑब्जेक्ट इट सीम्स टू बी इन मोशन. यानी ये सारे ऑब्जेक्ट आपको मोशन में नजर आएंगे. ठीक है, और आप जब बाहर आ जाओगे, यानी कि प्लेस पर, किसी प्लेस पर खड़े रह गए, जमीन पे खड़े रहकर अगर यही ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो तो आपको स्टेडी लगेंगे. ओके, सो इन वन केस that all objects which seems to be steady that are in motion, in another case that all objects are steady. So whatever you sense, what you experience, what you observe of the motion, that is totally depends on the frame of reference. ठीक है, तो frame of reference की definition simple क्या है? The place and the situation around the observer, that is called frame of reference. Two kind of the frame of reference are there. First is inertial and second is non-inertial. Okay, inertial और non-inertial क्या होता है? चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे. Right now, definition क्या है? The place and situation around the observer, that is called frame of reference. Okay, क्योंकि मोशन की जब बात होती है तब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र करना ही होगा. ठीक है, और हम हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी लेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, ओके, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्या करते हैं, पहले यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिख देता हूँ प्राइमरी. ओके, और उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाई जाती है वो हम यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, चलिए. So first we are going to write frame of reference. The place and situation around the observer is called frame of reference. शॉर्ट में लिखना है, आप पूरा लिखना है. ठीक है, frame of reference. Here to study about the motion into the entire discussion of chapter number 3 and 4, okay, we use Cartesian coordinate system. ठीक है, here we are taking Cartesian coordinate system
as a frame of reference. Okay, so what is the Cartesian coordinate system? ठीक है, और कैसे बनाई जाती है? Let's see. Okay, सबसे पहले 3 lines which are perpendicular to each other. आपको क्या करना है? 3 लाइंस लेनी है. ओके, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? That must be perpendicular to each other. यानी कि एक आप वर्टिकल लेते हो तो दूसरा कंपल्सरी हॉरिजॉन्टल लेनी होगी. ओके, एंड थर्ड that must be perpendicular to the both, right? So now you can create the 3-dimensional world. Okay, you have the x-axis, you have the y-axis, and you have the z-axis. Right? Okay, so that is called Cartesian coordinate system. I am repeating. First, you have to take the 3 lines which are perpendicular to each other and they are intersecting a common point. 3 लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है. ओके, बट क्या करना है? उसे कंपल्सरी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाना है. राइट? अब फाइनल थिंग, किसे आप x एक्सिस बोलोगे, किसे y एक्सिस बोलोगे और किसे z बोलोगे. You can give the name x, y, z anyone, but the thing which should be kept in mind that names must be given in an anti-clock direction. यानी आपको किसी को भी x एक्सिस बोलना है, y एक्सिस बोलना है, z एक्सिस बोलना है, छूट है. पर एक बार आपने किसी एक्सिस को नाम दे दिया, उसके बाद दूसरे एक्सिस का नाम एंटी क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए. ठीक है, क्लॉकवाइज नाम देते हो तो वो गलत हो जाता है. ओके, दैट इज द बेसिक असम्पशन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, ओके, चलिए तो हम क्या लेते हैं? 3 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Okay, and they must be intersect to a common point that is called origin. क्या कहा जाएगा इसे? Origin. Okay, and the name is given. This is the x-axis in a capital letter. That is y-axis, okay, and this is z-axis, but it is always in an anti-clockwise direction. Okay, now in this frame of reference we will define each and everything. Okay, for chapter number 3, our discussion is confined to the rectilinear motion. It means we only discuss the motion along the x-axis और y एक्सिस और z एक्सिस. ओके, यानी हम हमारा स्टडी जो है वो या तो x एक्सिस पर या z एक्सिस पर सीमित है. ठीक है, तो आगे अब इसी के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, जस्ट वी हैव अ लुक एट हाउ टू डिस्क्राइब और फॉर्म द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाई जाती है वो हमने देखा. ओके, नाउ by using this coordinating system, how we can get the position of any object. Okay, so here I have drawn the x-axis. Okay, this is the y-axis and this is the z-axis. Our discussion is confined on either axis, whether we are talking about the x-axis, y-axis or z-axis. Okay, so I have right now taken only 2 dimensions or x-axis and y-axis. Okay, here in entire chapter, as we know that our discussion is along only one axis. यानी हम किसी एक axis पर ही motion हो रही है उसी की बात करेंगे. But here we are going to take the definition of one-dimensional motion, two-dimensional motion and three-dimensional motion. ओके, उसके लिए मुझे 2 डायमेंशनल का एग्जांपल लेकर आपको समझाना होगा और यहाँ से पोजीशन जो हम डिराइव करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट के ऊपर से हम क्या डिराइव करेंगे? डेफिनेशन ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन. ठीक है, चलिए तो देख सकते हो आप, हियर आई हैव टेकन द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड देयर इज एनी ऑब्जेक्ट
particle P in this coordinate system, then what should I do? That first I have to take the perpendicular on each axis. Okay, so from the point B, I have drawn the perpendicular on x-axis. Same, I have to draw the perpendicular on y-axis, and I will get the two more points that I can say that is Q and that is R. Okay, and if you have the z-axis, you can also draw the perpendicular directly to the z-axis, and similarly you may have another point of intersection similar to the Q, R and S. Okay, the distance or the measurement should be taken from the origin. Okay, यानी आपको जो measurement लेना है वो कहाँ से लेना है? Origin से लेना है, यानी O से Q तक का distance, that is similar to the R से P तक का distance. ठीक है? Okay, so O से Q तक का जो measurement है, that is so called x coordinate. Okay, यानी कि particle P का x coordinate कितना, तो OQ जितना. ठीक है? Similarly, y coordinate कितना, तो y axis पर कहाँ पे है? इधर है. So OR is called y coordinate. OR distance कितना, तो PQ जितना. Okay? देखते हैं. So this is x coordinate and it is y coordinate. Okay? And that is written in the bracket form x, y. Okay? So Pxy is the position of the particle B, object P in this xy coordinate system. ठीक है? चलिए, तो ये x क्या बोला जाता है? x coordinate and small y is called y coordinate. Okay, and if you have z axis, then you have z, you have to measure from the origin of that particular point, and that would be z coordinate. Okay, now the main important thing is here you have to take the units. यानी कि आप position derive कर रहे हो, means length define कर रहे हो, that should be in meter according to SI system. ठीक है? SI system में हमने क्या सीखा कि length जो measure होगी वो मीटर में measure होगी. But this is your choice. You can take the centimeter, millimeter, meter, kilometer, angstrom, farad, fermimeter. Okay, any object or any system or any measurement system you can take. That is your choice. Okay, but here there should be confined or defined the system. यानी कि आपको यहाँ पे कौन सी सिस्टम लेनी है, मीटर में लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है, किलोमीटर में लेनी है, that should be defined. आपको clear cut बताना होगा उसका यूनिट. Okay, चलिए. So now I am going to give the definition of the one-dimensional motion. अगर ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस पर भी मूव कर रहा है, in either direction. Okay, so you can say that it's only x coordinate unity changes and rest y remains constant. If object is moving on a x-axis, y-axis or z-axis, then its only one coordinate's value would be changes. यानी कि ऑब्जेक्ट सीधी लाइन पे चल रहा है, तो उसका कोई एक ही वैल्यू चेंज होगा, या तो उसका x-axis चेंज होगा, या तो y-axis चेंज होगा, या तो z-axis चेंज होगा. यानी वैल्यू कौन सी बदलेगी? कोई एक ही. Then that is called the motion in a straight line or rectilinear motion or one-dimensional motion. ठीक है? तो डेफिनेशन लिखते हैं. If value of any one coordinate is changes, then such
is called one-dimensional motion. ओके, यानी कि कितनी वैल्यू चेंज हो रही है? ओनली वन, एनी वन. ओके, यानी कि कोई भी एक ही वैल्यू चेंज हो रही है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन में से एक ही वैल्यू चेंज होनी चाहिए. लास्ट में हम एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन. ओके, सेम टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल की डेफिनेशन आप खुद लिखो. ठीक है, मैं बता देता हूं क्या होगा कि इफ एनी टू वैल्यू चेंजेस ऑफ द कोऑर्डिनेट. ओके, यहां क्या लिखेंगे? इफ द वैल्यू ऑफ एनी टू कोऑर्डिनेट इज चेंजेस, then such motion is called two dimensional motion. And if all three value, if the value of any one two नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? if the value of all three coordinate is changes, then such motion is called three dimensional motion. फिर से रिपीट कर रहा हूं. if all three value of the coordinate is changes, then such motion is called three dimensional motion. ठीक है, तीनों के एग्जांपल भी यहां पे लिखा हूं. ओके, वन डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे? लाइकवाइज, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इफ ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि पटरी पर चल रही है, सीधी सीधी चल रही है, मोड़ नहीं ले रही है, इट्स नॉट टर्निंग. देन ओके, देन वन मोर एग्जांपल इज द बुलेट इज फायर. बुलेट फायर की जाती है, वो तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है. Right? So that kind of example is one-dimensional motion. Two-dimensional motion के example में क्या आएगा? तो two-dimensional motion के example में आएगा सबसे पहला, the striker is moving on the road. ठीक है? जो striker मूव करता है वो two-dimensional motion के example में आएगा. Okay? A man is walking on the ground. ठीक है? मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं कूद नहीं रहा. Okay? So you can take the x-axis and y-axis. That say to be that is two-dimensional motion. ठीक है? और थ्री डायमेंशनल मोशन में a butterfly is flying, a rocket is flying, a plane is flying. ओके, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करते हैं, हवा में मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तीन कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज होगी. ओके, सो दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन. ओके, चलो पहले एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर. एग्जांपल ऑफ 1D. ओके, तो आप इसके नीचे लिखोगे 2D टू डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन लिखने के बाद और 3D थ्री डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन लिखने के बाद उसके एग्जांपल आप लिखोगे. ठीक है, तो 1D एग्जांपल्स आएंगे. अ कार मूविंग ऑन straight road. Okay, then दूसरा example, a bullet is fired from gun, but obviously गन से फायर होगी, हाथ से फेंकोगे तो नहीं चलेगा. Okay, that example of 2D. Okay, striker moving on carom board. Okay, a man is walking on the ground. And 3D examples आएंगे आपके. Motion of butterfly. The motion of plane.
helicopter, a rocket, etc. Okay? So here today we have discussed what is motion, study of the motion, Cartesian coordinate system, okay, how to create the position, okay, and definition of one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional motion. Okay, I hope you have enjoyed it. अब आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हो चुका है, अब आपको मजा आएगा. Okay, till then take care, bye bye.